Hello everyone. We are back again with the second episode of We the Women podcast. This is a podcast where we try to imagine the world in the feminist way, in an alternative way. In the last episode, towards the end, we had discussed that the next time we would be talking about reimagining economy from a feminist perspective. And today we have someone who is going to help us do that. We have with us Purvi Vyas, who is a farmer. She left the life of 9 to 5 to become a farmer, and today she is here with us to talk about her experiences. And she also works with groups of women farmers in Gujarat. Therefore, she will also be able to tell us about if we reimagine a feminist economy, what it would look like. So, thank you so much, ma'am, for joining us today. We are so happy to have you here today. Thank you So, for having me, Janvi. Thank you so much for having me. And I think we should move on from ma'am to Purvi now. We've crossed that stage. So we should move on from ma'am to Purvi now. yes, I'll try my best because starting the I've called you ma'am na, so Yeah, that true. has sort of uh, Yeah. Try. See if I'll it try. works. I'll definitely try. So, first of all, let's just start off with a little bit about you. Like, what made you come from a job, or the life of uh, 9 to 5 to farming? What fascinated you about farming? Why farming? Right. Um, so it's not a simple transition. So what happened was I was working I've always worked freelance. I've had only very small one or two jobs. Um, but one of my freelance work was I was a research assistant to Beena Agarwal, who's one of the biggest feminist writers. Beena Agarwal was doing a research on joint forest management in Gujarat, Kerala, and one other part, and Nepal. And so she was looking at when you get into joint forest management, how do women look at what to plant, how much to plant, and she was looking at women's perspective um, in joint forest management programs in different areas of the world. And so while working with her, I worked in an area called Dediapada in South Gujarat. It comes under Narmada district, and it was one of the biggest revelations for me because um, I loved working with the community. I loved interacting with the community that lived there. And I ended up spending a whole year with them. I was not required to, but I found a family that I really connected with, and I just lived with them for a whole year. And living with them made me realize all these concepts of sustainability and all these modern concepts that we have around the environment. These community already live them. They don't know the words, they don't know the concepts, but they live their life so much in tune with nature, and have so much reverence and understanding of the world around them. So when I came back, it put me on a crossroads in life. Like I really liked the life that I was living with the tribal community, and I was not happy with the urban life. And my parents just happened to buy this piece of land. And how parents do. My mom was like, "Drop me to the farm today because there's no one else." And I was like, oh, who wants to go to a farm? I was like, got dragged to this farm. And then I came here and I looked around and I was like, it's not so bad, actually, this is not so bad. And I told my mother, I'm going to stay back and I'm going to explore living off the land. And so
I just jumped in head first without understanding anything about anything, about farming, about rural life, about, nothing. I just jumped in, and I've been here for 20 years now. Wow, that's so amazing. Yeah, Uh, I'm sorry, it's a long drawn out story, but no, 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 no. This is what we want to have on this platform. Ke you talk as much as you want. You refer. There's no pressure, structure. It's just us talking. right, right. And so that's basically it. That I moved Hmm. here, and then slowly, gradually, I thought to myself, if this piece of land, if this is all I had, how would I Hmm. live my life? And it just took one day at a time from there. So that's how it happened. So, going a bit ahead from there, you also work with many women farmer groups right now, and Mhm. you also teach about food, about agriculture, about the politics around all of it. So, if we can take those up one by one, if you can talk a bit about your work with the women farmers, and also a bit about why you think why you are also teaching at universities. So, Right, right. you are right now connected with two different worlds, like very different worlds. So, if you can talk Absolutely. to us about both of them. So it took me about 8 to 10 years, I think, to learn farming, to have the confidence to say that I know how to farm. I don't call myself an expert at all, because I don't think anyone, I mean, people can become experts, but I don't think I can ever be an expert at farming, because there's so much to learn. The more you get into it, the more you realize that you just don't know anything. There's always some scope to learn more. So the teaching came first. Um, so for 8 years, I had kind of taken a hiatus from work, and I was just farming and visiting farms and learning how to farm. And then 8 or 10 years later, a friend of mine was working with PDPU, which is now Pandit Hmm. Diniya Energy University, PDEU. And they have a audit program where the students go out for a day and explore something new. They call it an audit program, and they sent a bunch of students to my farm, and I was really excited to have them, and I showed them around, and because I had been working on the farm for 8 years, and I was just dying to tell somebody everything about it, right? So I just was all out. This is what happens to farmers, da 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 da. And so within that time frame, what had also happened was I had understood the food system in a way, because we're used to seeing food as fragments. You like food, farmers grow food, retailers sell food, but we don't see the network of how the whole system works. And I was dying to tell someone that a lot of our life is centered around how food is grown and how we trade in food. And I got the opportunity to do that with this group of students, and I was lucky enough that they also enjoyed their time with me. So they went back and they recommended that other students be given the opportunity to teach this class, I mean, to come to the farm and things like that. And so the dean invited me. He was like, the kids are very happy with the time they spent with you. And so by that time, I had mentally a course design in my head. And so when I went to see him, I was like, I have this course, I would love to teach it. And he said, done. He gave me that subject as a core to teach every semester. And I taught that in PDPU for 12 years. And so basically, that course was designed that, when you make food choices, that choice not only has an impact on your health, but it has an impact on the health of the society and the environment. So, nothing happens in isolation. And so, how do you connect the dots that your choices are ultimately having an impact on other areas
in life as well. So that's what happened. And then WGWO is the organization. Well, WG, it was a network. So I was associated with various NGOs doing environmental work, and then they realized that I have understanding of agriculture as well, and so then I got invited to talk about what I was doing, and then slowly, gradually, I got involved with training of women in switching from chemical to organic, talking about indigenous seeds, talking about all the other issues around farming. And so now, for the past decade or more, I've been working with different NGOs in Gujarat with women farmers and how to help them switch from chemical to organic. So that's how that has happened. Hmm. So you talked about students coming to your farm. तो हाल ही में मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। सुनील जी करके एक समाजवादी, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल हिम, एक्टिविस्ट, आई थिंक छोटा टर्म हो जाएगा, बिकॉज he has been in this space since the time of Lohia and JP. So he's a very Right, senior socialist leader. right, So right. he runs this andolan called Lok Vidya Andolan, Hmm. where the basic idea is कि लोगों के पास जो विद्या है, जो नॉलेज सिस्टम है, उसके बारे में बात करना है। एंड उनके पास भी कुछ बच्चे टेस्ट से आए थे, तो उन्होंने he sent them to the villages asking them कि गांव की तकलीफें के बारे में तो सब कोई बात करता है कि दिक्कतें क्या हैं गांव की, लेकिन मुझे तुम लोग गांव की शक्ति ढूंढ के लेके आओ। तो that was the perspective from which he sent the Absolutely. student. That's absolutely brilliant. That's absolutely brilliant. क्योंकि गांव में इतना ज्यादा टैलेंट और लाइफ स्किल्स है ना, हम हमेशा अनफॉर्चुनेटली, इंक्लूडिंग मैं, बिफोर आई मूव्ड हियर, कि हम सिर्फ पढ़ाई को टैलेंट या स्किल मानते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने खेती चालू की, मेरे को खेती का ख नहीं आता था, राइट? अगर आप मेरे को पूछते कि दूध कहाँ से आता है, मैं बोलती अमूल से आता है, राइट? बीच में भैंस होती है, वो नहीं मालूम था। मतलब मालूम होता है, बट यू डोंट पुट इट टुगेदर। सो एक दिन हम खेती कर रहे थे, आप जयंती काका तो को मिली हो, तो जयंती काका के बच्चे भी थे वहां पे, और वो हम सब वीडिंग कर रहे थे। तो टमाटर के आसपास जो वीड्स हो गए थे उसको साफ करना था। अब मैं काम कर रही थी, मैंने सोचा मैं बहुत डिलिजेंट हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। फिर धीरे से जयंती काका का सन उनको बोलता है कि पापा, आप तो बोल रहे थे कि ये तो बहुत पढ़ी लिखी है। सो हिज फादर वाज लाइक, हाँ क्यों, क्या हुआ? इसे ये तो टमाटर उठा निकाल रही है कब से, बिकॉज आई डिडंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीड क्या है और टमाटर क्या है। तो मैं टमाटर जो थे वो निकाल रही थी, लाइक so he was like, you said she was so educated, look at her, she's acting like a complete fool. So I completely agree that वो नजरिया तो बनाना ही पड़ेगा कि क्या स्किल्स है रूरल कम्युनिटी के पास, और बहुत ज्यादा स्किल्स है जिसको हमने बहुत सालों से अंडरमाइन किया है। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक जो लोहिया जी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। Yeah. So yeah, so वही था, जब when you were talking about the students coming in, so this was the thing that was coming to my mind. So now coming back to the topic for this session, तो अभी हमने देखा कि थोड़े टाइम पहले there was this death of a 26-year-old CA who died at a multinational corporate while working for a big one of the big fours, कि जहाँ पे उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर। अभी थोड़े दिन पहले वापस न्यूज आई कि बजाज फाइनेंस के किसी एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। सो दिस इज the economy that is very masculine in nature, not just dominated by men, but also the structures are very masculine in nature.
So if we reimagine economy from a feminist perspective, एक तो from where do we start? Because it's just such a wide thing. Like, how do we Yeah. start? I think the expectations, women have to behave like men and even be more powerful or stronger or better at everything than men. You know, I think to understand the see what happens is that a lot of the times when we are talking about women and you say that sometimes they require other skill sets or other capacity, it's seen as a negative thing. Ki bhai, like I'll give you a simple idea, a simple thing that really triggered me was that that whole conversation about menstrual leave, right? A lot of the women were saying, why we have fought for all these years for menstrual, for equality, and then, talking about menstrual leave would bring us back a few years. And I think biologically, we are different species, right? Hormones Hmm. drive a lot of our lives. We go through different hormonal stages in our lives, and they affect how we function and how our productivity works. So recognizing that and not judging somebody or undermining somebody for being whatever way is, I think, very important. So that's a first start, that women and men have different capacities and that we should learn to accept and strengthen those rather than undermine people for not having them. Recognizing the unpaid labor of women, recognizing the work that women do at every stage, right? Supposing, if I take the case of my own family, my mother used to work, my father used to work. Both of them were working parents. But when they got home, my dad could kick his shoes off and watch the television, whereas my mom had to cook dinner for all of us, right? Eventually we trained our dad to say कि you have to contribute in the house, but that's because we trained him, we bullied him into helping us out. But this unpaid labors in farming, you will see that everywhere. um, uh, One of the things that WGWLO and other organizations do is to give women the recognition that they are farmers, because women refuse to recognize that they are farmers, right? So you go and talk to a woman in the village and you say कि आप किसान हो, she will be like नहीं, मेरा पति किसान है, मेरा पिताजी किसान है, मेरा भाई किसान है, मैं तो सिर्फ काम करती हूँ. But if you look Hmm. at the workload, majority of the workload is handled by women. हस्बैंड होता है, डिसाइड करता है कि कौन से बीज बोने हैं, फिर वो चला जाता है. सारे मजदूरी औरत करती है. वो हार्वेस्ट करके घर तक लाती है, बाजार में बेचने को हस्बैंड जाता है, तो पैसे उसके हाथ में आते हैं. बहनों की मजदूरी का कोई नहीं है, घर के लिए काम किया है. अगर वो बाहर जाती है, नेबर के घर जाती है काम करने के लिए, तो उसकी मजदूरी काउंट होती है. लेकिन घर में जो भी काम किया वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है. घर की खेती है, आप काम क्यों नहीं करोगी, है ना? रूरल एरियाज में मैंने सिर्फ इतना थोड़ा देखा है कि रूरल एरियाज में थोड़ा बहुत जो मेन होते हैं ना, वो अकोमोडेट करते हैं, because they understand, no, that they've both worked on the farm equally. So many times I see the men looking after the children, or men helping out a little bit in the cooking or something. But in urban areas, I find that women have it really difficult, because not only do they have to look after their homes, they have to perform exceedingly at work, and they have to manage the rest of everything. So I think it has to start with the attitude that we have about women, and the expectations that we have from women. I think that's very unfair. Hmm. ये आई थिंक महिला किसान ये टर्म भी तब जाके पब्लिक डिस्कोर्स में आया जब किसान आंदोलन हुआ एंड सो many women came out, women farmers came out. Absolutely, absolutely.
And एंड और दूसरा ये भी है ना कि गवर्नमेंट इन अ सेंस रिकग्नाइज तो करती है, जैसे हमारे महिला किसान होते हैं तो उनको लीगली तो रिकग्निशन मिलती है, लेकिन सोसाइटी उनको नहीं रिकग्नाइज करती है, right? So there are so many hurdles even in the bureaucracy when they go to assert their rights. So at every stage, legally whatever their rights are, but to achieve them is such a big struggle. इतना struggle होता है बहनों को लैंड को एक्सेस करना, स्कीम्स को एक्सेस करना, एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स अगर सरकार ने दी है तो उसको एक्सेस करना, तो मतलब बहन होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कई बार. ma'am, if you can talk a little bit more about uh, these difficulty to access, and also add difficulty to access to markets, because अगर कोई महिला किसान अकेली है तो पहली दिक्कत तो ये होगी कि उसको जमीन ही नहीं मिलेगी. लैंड ओनली इफ द हस्बैंड हैज डाइड, देन somebody will try to take it. और पापा का लैंड तो लड़कियों को मतलब What WGWLO is trying to do is basically that कि women को अपने लैंड का राइट्स और उनका हक मिले. तो बहुत सा जैसे बेटियों का है, राइट? बेटियों का सोशल कंडीशनिंग ही ऐसा है कि अगर तुम्हारा भाई तुमको आके बोलता है कि भाई मेरी जमीन में से तुम नाम निकलवा दो, राइट? देन यू आर अ गुड गर्ल अगर तुम नाम निकलवा देती हो. पर अगर तुम्हारा हक तुम असर्ट करती हो कि भाई नहीं, क्यों पापा ने मेरे लिए भी जमीन रखी है, तो आई शुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू लैंड, देन यू आर सीन एज अ बैड पर्सन, राइट? देयर आर सो मेनी केसेस दैट कम टू WGWLO कि लड़की जब विधवा हो जाती है लेकिन उसको वो फार्मर का नेम चाहिए होता है जो उसके पापा के लैंड रिकॉर्ड्स में होता है, टू शो दैट शी इज अ फार्मर और समथिंग. लीगैलिटीज मेरे को ऑनेस्टली बहुत नहीं पता है, पर so then she has to go through these legal systems whereby she has to go to the tiwari, जो ब्रेन फॉग उसको क्या कहते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, एनीवेज जो जिसके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं अपने, जो पटवारी. हाँ, पटवारी. सो फर्स्ट टाइम शी गोज टू हिम टू फिगर आउट कि भैया मेरे हस्बैंड की लैंड कितनी है, एंड ही रिफ्यूजेस टू गिव हर इंफॉर्मेशन बिकॉज ही इज लाइक तुम्हें क्या करना है, राइट? क्या करना है लैंड करने के लिए. Then brother has in many cases removed her name. In many cases we are finding, the research that we are doing, they're saying that brother has also deemed her dead, कि वो गुजर गई है. So then the whole process of showing कि भाई I am not dead, I am alive, and that I am, have access to this land. So what one has to recognize is that land is a very, very important resource for rural communities, and now with real estate prices and everything going up, there is so much demand on this limited resources that people are doing all sorts of illegal things, and so resorting to, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है कि बहनों को एक्सेस ही ना मिले. बहन विधवा हो जाती है, फिर उसके इन लॉज उसको इतना तंग करते हैं कि भैया वो घर छोड़ के अपने चली जाए. women have to really fight for their rights, women have to fight to such an extent that they get completely isolated by the society they live in, because she's asserting for her right. अगर वो अबला नारी बन के चुपचाप अपने घर में जो उसको दो निवाले देते हैं उसके इन लॉज वो लेके चला ले तो सब ठीक है. But the minute she asserts her individuality and says that this is my right and I want access to my right, all hell breaks loose. मार्केट के साथ ये है कि if you
if you go to any agricultural market, APMC ले लो, seeds traders के पास ले लो, it is such a patriarchal environment. आप कभी एक औरत को नहीं देखोगे वहां पे. ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सकते हैं, but the systems are in such a place. Like even if you look at हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स भी होते हैं ना, जो ट्रेनिंग्स देते हैं किसानों को, वो भी सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली मेन को फोकस में रखते हैं, because there has been so much push that you must include women farmers, because the feminization of agriculture has happened. People are realizing that it's actually the women who are doing the farming. इसलिए टोकन के हिसाब से 4-5 बहनों को लेके रखते हैं, right? The whole approach to the whole thing is so patriarchal कि भाई सीड्स का है, ये तो बहुत टेक्निकल है, आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इनको समझाएंगे. Whereas traditionally women have been the seed savers, right? And so patriarchal approaches come everywhere in the market, come everywhere at every step where market comes into play. Labor काम है तो बहनों का काम है, मार्केट के साथ एसोसिएटेड है, ट्रेनिंग के साथ एसोसिएटेड है. नाउ सपोजिंग द वुमन इज अ विडो, उसके पास लैंड नहीं है पर उसको लोन चाहिए, किस बेसिस पे मिलेगी, राइट? तो शी हैज टू फॉल बैक ऑन थिंग्स लाइक मनी लेंडर्स इन विलेजेस, बिकॉज बैंक तो उनके सामने देखेगी ही नहीं किस बात के कोलैटरल पे उनको लोन मिलेगा. ऐसा नहीं है कि बहनों को ही नहीं मिलता, men also don't have access to agriculture because land holding is either in the joint family name or he doesn't have access to the land. So whatever issues people face in rural areas, women face it 3 times more. You will always find women unable to access things 3 times more than men. So I think ये जो लैंड वाला और मार्केट एक्सेस वाला मसला है, उस पे तो अगर हम एक एक चीज में डिटेल में जाएंगे तो इट वुड टेक आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि इतना वो बड़ा इशू है. मे बी some other time we can do a separate thing on this as well, because land is such a fundamental thing. And because land is a guarantee. लैंड है तो फिर आपके पास कुछ श्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी है. लैंड नहीं है तो फिर देन यू आर एट द मर्सी ऑफ So it is very complicated, it is very complex, the whole issue, and there are so many nuances, there are so many nuances. छोटे छोटे इतने nuances होते हैं कि हर चीज को like लोग बहुत सिंपली देखते हैं कि भाई I'm trying to think of an example कि फूड में आप देख लो कि एनिमल क्रूअल्टी होती है तो वीगन बन जाओ, राइट? पर एनिमल क्रूअल्टी क्यों हो रही है, इतने लेवल तक क्यों पहुंची? अनलेस वी अंडरस्टैंड दैट, veganism is not going to solve the problem. That's what I'm saying. With all of these issues, there are so many layers that you have to understand why we are in this situation to be able to solve that to begin with. Yeah. So when you're talking about veganism and animal cruelty, so UP government ने I think थोड़े साल पहले they put a ban on cow slaughter. That they are a government, they can put in a policy like that, no worries. But then कुछ महीनों में the problem was कि इतने सारे stray cattle होने लग गए कि वो लोग फिर farmers के लिए it became such a problem. तो काफी लोग like इस 24 के इलेक्शन से पहले there were reports coming in from UP कि लोग बोल रहे थे कि चौकीदार को प्रधानमंत्री बनाया, अब हम अपने खेतों के चौकीदार बन चुके हैं. तो तो वो वैसी चीजें आ रही थी. एक तो दिस थिंग, जितनी सिंपल भाषा में इतना कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म वो ये लोग दे सकते हैं जिसकी कोई
या सो वो वही है कि दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज. हम लोग वेस्ट का मॉडल सीधा यहाँ पे वी नहीं कैनॉट. कर सकते. No, we cannot, and we should not, because our issues are different, no, the way. But the problem is क्या मालूम है जानवी, कि हमने वेस्ट को इतना एम्यूलेट किया है ना, हमने वेस्ट को इतना कॉपी किया है कि बहुत सारे इश्यूज हमें भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए वेस्ट का मॉडल ये मतलब आइडियल सिचुएशन है. दिस इज वेयर वी नीड टू गेट एट. वेदर हमारे लिए वो राइट है रॉन्ग है वो हमने असेस नहीं किया है, हमने बस उनको एम्यूलेट किया है. तो उसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स भी थोड़े बहुत तो हमें भी फेस करने ही पड़ेंगे फ्यूचर में. हमारे यहाँ भी सिचुएशन वही हो रही है, क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं अपने हिसाब से, उसको मॉड्यूलेट भी कर लेते, अपने हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट भी कर लेते, पर हमने किया ही नहीं है. सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में हमने, जैसे हम जो हमारा चिकन इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पोल्ट्री इज रेज्ड इन द सेम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वे एज इट इज रेज्ड इन द वेस्ट. हमारे यहाँ cattle, we look at cattle differently because we have a cultural connection to cattle, right? हमने cattle को कभी भी domesticate सिर्फ consume करने को नहीं किया है. We have had a relationship with cattle where the whole cattle has a role to play. You know, every part of the cattle is useful to us in some way. गोबर काम आता है खेती में, दूध हम खाते हैं, फिर उनका चमड़ा है जिससे कम्युनिटीज शूज एंड बैग्स बनाते हैं, उसका बोन्स यूज करते हैं. तो मतलब everything about the cattle was used in our communities in the past. So matlab, to just isolate it to saying this equals to bad without understanding the institutional problems, I find very difficult and very sad to explain also, because reality नहीं पता है, तो explain करना भी बहुत difficult हो जाता है. एक तो ना मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है कि जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं होता और वो लोग सिखाने आते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, एंड दे मेक पॉलिसीज फॉर पीपल जिनकी लाइफ का उनको कोई आइडिया ही नहीं है. या सो थोड़े टाइम पहले आई हैड गॉन टू seminar by Urvashi Butalia. So she is the founder of Zuban, the feminist publication. तो उन्होंने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी कि थोड़े टाइम पहले गांव की कुछ महिलाएं, उन्होंने वो पब्लिकेशन हाउस को कुछ काफी सालों पहले अप्रोच किया था कि हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ बुकलेट बनानी है. नाउ द थिंग इज कि गांव में आप सीधा बॉडीज नहीं दिखा सकते विदाउट एनी क्लोथ्स ऑन, बिकॉज दैट वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो द सॉल्यूशन दैट द विमेन थॉट ऑफ वाज कि कैसा होगा कि 2 लेयर होगा, आप कपड़ा पहनाओ लेकिन वो ऐसे खुले. तो वो उनकी किताबों में इस तरीके से वो स्ट्रक्चर किया था कि वो बॉडीज पे कपड़े थे लेकिन वो ऐसे पेपर आप उठा सकते हो, आप वो ब्लाउज खोल सकते हो, आप चनिया खोल सकते हो, धोती खोल सकते हो, उस तरीके से. सो हाउ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स कम अबाउट फ्रॉम बहुत सारे लोगों के इंक्लूजन होता है, स्पेशली विमेन. तो हैव यू कम अक्रॉस सम दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स कि जहाँ पे आपको एकदम नया नजरिया मिला व्हेन यू आर वर्किंग विथ द विमेन फार्मर्स एंड द अदर विमेन एक्टिविस्ट्स एंड या एकदम एग्जाम्पल याद नहीं आता है, पर हमेशा मिलता है, हमेशा एक नया नजरिया मिलता है. बिकॉज women and especially women think from a very different perspective, और उनके insights बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं दिमाग में आ रहा है, nothing is coming to mind, but one story is coming to mind about
जो हम पहले बात कर रहे थे ना डेवलपमेंट के बारे में कि हाउ Hmm. perceive that. I'll come back to this nazariya also if something pops into my head. पर सो जो आदिवासी फैमिली के साथ मैं रहती थी ना, तो पहले पहले दे वे वेरी शाई टू फीड मी द फूड दे वे, बिकॉज दे हैव दिस कॉम्प्लेक्स है कि हमारा अच्छा नहीं है, आपको कैसे खिला सकते हैं. And so after a lot of pushing, they started feeding me जो वो रोज खाते हैं. एक दिन हमारे दोनों का डे ऑफ था. She was an older woman. She must have been in her early 50s और middle 50s. तो मैं उनसे बैठ के बात कर रही थी कि आपको आपका फेवरेट खाना क्या है, you know, Hmm. just chit chatting. And so Hmm. she was telling me कि how the PDS that gives them rice and wheat has increased their work. उनका काम बढ़ा दिया है उन्होंने. कि True. वो पहले तो नोमैड्स थे, तो मतलब हंटर गैदरर्स, मतलब गैदरिंग करके बहुत खाते थे, और उनमें Hmm. रोटी का इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन पीडीएस में सब चावल और गेहूं मिलते हैं. तो she despised making rotis because she thought it took so much of her time away. But again you had to, because roti चावल और गेहूं मिलता था, तो you had to sort of get used to that kind of food, or her children were used to that kind of food and they appreciated it. तो मैंने कहा आपका फेवरेट फूड क्या है. तो Hmm. अपने घर के पीछे जाके जहाँ पे पंपकिन लगाया था उन्होंने, वो पंपकिन लेके Hmm. आई, फायर पे रोस्ट किया, फिर कहीं दूर और जाके हनी गैदर करके लाई और रोस्टेड पंपकिन पे हनी डाल के हम दोनों ने खाया. और बिलीव मी, Wow. it is one of the best meals I've ever had in my life. So this perception that you have that आप लोगों को फ्री में अनाज देते हो, फ्री में चावल और गेहूं देते हो, तो आप उनको बहुत हेल्प करते हो, और आप उनका न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी में हेल्प करते हो. तो इन अ लॉट ऑफ केसेस जो लोकल डाइवर्सिटी होती है खाने की, लोकल जो प्रेफरेंसेस होती है खाने की, Hmm. वो आप होमोजेनाइज कर रहे हो, है ना. जो Hmm. डाइवर्सिटी है उसको होमोजेनाइज करते हो. तो ऐसे पर्सपेक्टिव्स बहुत सीखने को मिलते हैं कि यू थिंक इट्स अ रिलीफ. और रोटी बनाना तो बिकॉज यू सीन योर पेरेंट्स एंड यू डन दैट, आप खुद भी बनाते हो, तो आपको इतना बड़ा सा नहीं लगता है. जो कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुआ है, दे सी इट एज अ बर्डन. पहली बार मेरे को समझ में आया. अभी शायद नहीं होगा ऐसा, बिकॉज अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है नाउ, Hmm. एवरीबडी ईट्स रोटी. तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग थी अबाउट what one considers important. Yeah. This is such an interesting and important story. Hmm. कई बार, like even we, I think, fall into the trap. Uh, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैं तो वही कह रही हूँ कि मैं ही वो ट्रैप में गिर गई थी कि भाई मैंने सोचा कि रोटी बनाना क्यों पसंद नहीं है. बट व्हेन यू थिंक अबाउट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, देन इट मेक्स कंप्लीट सेंस. so, not just like into the trap of that, but also कि कई बार we also feel कि we want to do something for them, and हम लोग पॉलिसी रिकमेंडेशंस और पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करते रहते हैं. But maybe we should just talk to them first with how. Absolutely. Yeah, so 100%. if we And also, want. if I can Hmm. quickly add, Hmm. talk to them and have the ability to walk away if they say कि we don't need you. Yeah. Most NGOs or most organizations are unable to do that. You know, if a community says कि thank you very much, but we are okay with how things are, and we would like to handle things the way we want to, आप आए हो, थैंक यू वेरी मच, बट वी डोंट नीड यू. तो वहां से चले जाने की तैयारी रखनी चाहिए आपको. जो
मैंने Hmm. आज तक कहीं नहीं देखी. Hmm. So अभी ना I've been reading this book called Personal is Political, अरुणा रॉय की जो ऑटोबायोग्राफी आई है, and in that context I have been listening her talks of late, वो जो बता रही हैं, तो वो बता रही थी कि कैसे कि पिछले कुछ सालों में नॉट इन जस्ट द बीजेपी रेजिम बट काफी सालों में ऐसा हुआ है कि देयर इज नो प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दीज थिंग्स. एक आइडिया वो फाइनल हो चुका है कि डेवलपमेंट का यही रास्ता है, यही आगे बढ़ना है, एंड ये तय हुआ है, पता नहीं किसका इनपुट है. सो जो कम्युनिटीज के लिए डेवलपमेंट है उनका इनपुट तो है ही नहीं. होता ही नहीं. तो हाँ, होता ही नहीं. like you have been working with so many people on ground and you've been working with women farmers, and not as an activist कि मैं तुम्हारा भला करूंगी, you are one of them and you have been working in that capacity. So how do we build spaces कि जहाँ पे यू नो कॉन्वर्सेशन हो सके एज इक्वल्स एंड सब लोग साथ में मिलके तय कर सके कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटीज अपने साइलोज में हैं, एनजीओ वाले एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सब अपनी दुनिया में है कि ये हाँ हमको भला करना है, लेकिन दे हैव नॉट टॉक्ड टू द कम्युनिटीज आस्किंग कि क्या करें हम लोग आपके लिए. तो हाउ डू वी बिल्ड दो स्पेसेस? I think we as a community must develop an ability to listen. All of us just कहीं भी जाते हैं ना, हम जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं. हम कहीं भी जाके चुपचाप बैठते नहीं हैं, लोगों को सुनते नहीं हैं. सपोजिंग गांव में अगर आप जाओ और कोई प्रॉब्लम की कोई बात करता है तो इमिडिएटली आपका दिमाग जाता है कि कैसे उसका सोल्यूशन ला दूं, right? How do I sort this out? And I think the ability to listen to people and just give them a space to speak. I think जैसे वो रिलेशनशिप पे भी होता है ना कि आप अपनी फ्रेंड के साथ हो, आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक स्पेस चाहिए रैंट करने के लिए. सोल्यूशन तो आप फिगर आउट करोगे. I think it's the same for all communities, everybody in general. And so that space for people to be able to rant and for you to listen to people, giving people the space to say, okay, this is what I'm angry about, this is what I'm frustrated about. I think that's very important. How can we do that institutionally? I don't know, but it's something that NGOs will have to learn. That NGOs के जो workers होते हैं ना, maybe it can be something that can be taught in say जहाँ पे आप social sciences पढ़ते हैं, जहाँ से आप social work का course करते हैं, maybe that's where you will have to learn, and NGOs will have to teach their staff कि आप जाके सिर्फ मतलब प्रोग्राम मत थोपो कि आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है, आपको ये फलाना बुक भर के देनी है. But sometimes just go and say hi, how are you, what's happening. And I'm sure a lot of NGOs do that. ऐसा नहीं है कि NGOs नहीं करते हैं, but that has to be done more. And once that happens at the NGO level, then the NGO have the capacity to convey that to higher spaces. मतलब एनजीओ के पास वो कैपेसिटी है कि वो आगे जाके लोगों को बताए या समझाए कि भाई ग्राउंड रियलिटी ये है. तो बहुत सारे एनजीओस पर भी प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, राइट? उनको फंडिंग मिली, फिर फंडिंग का वो करना है, रिपोर्ट बना के भेजना है. सो व्हाट आई फील इज कि आप लाइक young people also have to be interested. Not, I don't mean आप urban spaces में जाके rural spaces का take over करो और वहां जाके सुनो. I mean, rural young people also have to be interested in their own community. At the moment, the rural young people are also very interested कि भाई पैसे कमाने हैं, बाहर चले जाओ, गांव में कुछ नहीं है.
तो वो सेंस ऑफ जो कम्युनिटी हुआ करती थी, जो सेंस ऑफ मेरी गांव के लिए करना है, मेरा सिटी के लिए करना है, वो कहीं गायब होता जा रहा है. एंड I don't know how to bring that back. Like, I don't know how do you inculcate those values in people where they feel proud of who they are, where they feel proud Mm, of the place they come from, where they feel that they belong and that they need to contribute back. I mean, I find that missing sub jagah, mm, everybody wanting to leave, everybody wants more, everybody wants money. So कैसे वो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करे ना लोगों में, मेरे को नहीं मालूम. mm. सीरियसली आई एम एट अ लॉस, आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस. Yeah. So two things. Like one thing that you said towards the end, the idea of giving back to society that has gone missing. Like जैसे आई थिंक ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले वी टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये आइडिया आया कि हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे थे जहाँ पे देयर वर मेन एडवाइजिंग अदर यंग पीपल के बिजनेस करो, ये करो, वो करो. तो शेयर्स के बारे में बात करेंगे. दे टॉक अबाउट पैसा ट्रिपल एक्स कैसे करना है, नेटवर्किंग करना है, ये वो. stick to networking. There's no actual building of relationship. It's networking. And then all those things, but nobody talks about this very important aspect जो कल्चरली हमारे यहाँ पे बिजनेस में, गुजरात में या कहीं पे भी, आई थिंक इंडिया में दिस हैज बीन अ पार्ट होता ऑफ है. बिजनेस कि या यू गिव बैक टू सोसाइटी. या आई मीन I mean, I do understand we live in a capitalist society and, materialistically सब कुछ होता है. लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इफ आई कैन से दैट, Yeah. मटीरियलिस्टिक ज्यादा ही हो रहा है. द कोर वैल्यूज दैट यू एंड आई ग्रू अप एज अ चाइल्ड, I don't see that very much. And not just in urban areas, rural areas में भी वैसे ही हो रहा है कि आपके पास पैसा है तो people will look at you and respect you, and otherwise if it's a poorer person then they're looked down upon. And so this whole concept of somebody's talents being respected or somebody's skills being respected is just replaced by मनी. हमने सबको कमोडिफाई कर दिया है, एग्रीकल्चर को भी कमोडिफाई कर दिया, खाने को भी कमोडिफाई कर दिया, स्किल्स को भी कमोडिफाई कर दिया, सबको. एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो Hmm. So आई स्ट्रगल. one another thing that you said, I think that can be beginning of the answer, because the situation is already so complex. There cannot be one solution कि एक solution आया और सब ठीक हो जाएगा. There has to be a long process. But I think the beginning of the solution is where you talked about कि जैसे हम किसी दोस्त के साथ रैंट करते हैं या बात करते हैं या सुनते हैं, तो आई थिंक डेवलपिंग दोज फ्रेंडशिप्स अक्रॉस वेरियस पॉकेट्स के, रूरल अर्बन के जो डिवाइड हो गया है, क्लास का जो डिवाइड रहता है, कास्ट का जो डिवाइड रहता है, तो इन सब बैरियर्स के बियॉन्ड अगर हम कोई ऐसी जगह बना पाए. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट जो आपने किसान आंदोलन के टाइम पे आपके फार्म पे जो होस्ट किया था गैदरिंग, तो उसमें हर कोई था, कोई कास्ट का, क्लास का, अर्बन रूरल का डिवाइड नहीं था. वहां पे मैं भी थी जो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी. वहां पे किसान लड़कियां थी, वहां पे रूरल यंग लड़कियां थी. तो इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल. So I was also going to say that the best place to start a community or to create a community is food. खाना खिलाओ, खाना बनाओ, खाना खिलाओ और साथ में खाओ. Food is the best medium we can use to build a community. तो ऐसा ही करना पड़ेगा.
फूड गैदरिंग्स करने पड़ेंगे, सबको बोलना पड़ेगा कि आ जाओ, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और मजे करते हैं. तो that would be a really good place to start. If people started cooking together, if people started eating together, not Hmm. Zomatoing together, but actually cooking together, that would be so much. I mean, वो बहुत अच्छा रहेगा. So yeah. Hmm. So we have been talking for almost an hour now. Just one last question I wanted to ask. Ki, so we are basically हमारे यहाँ पे हर टाइप की वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं बट द प्राइमरी पीपल हु वी आर टारगेटिंग और जिनके लिए ये नेटवर्क बना है आर यंग विमेन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोग ने शुरू किया था ये कॉलेज स्पेस से तो Right, शुरू ही right. हुआ ये वुमेन स्टूडेंट्स से सो यू नो what would you like to tell women who are trying to get into workforce जो इकोनॉमी में घुस रही हैं या जो शायद खुद का कुछ शुरू करना चाहती है अगर हम एक ऐसी इकोनॉमी या दुनिया के टुवर्ड्स बढ़ना चाह रहे हैं जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है जहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं जिनकी हम बात कर रहे थे ये प्राइमरी वैल्यूज हैं अगर ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो what is your advice for them how should they proceed in their lives प्रोफेशन में करियर में इकोनॉमिकली कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए हाय एडवाइस तो कैसे दे किसी को. But I think what young people, or I can just say from experience, when I was your age, I had absolutely no confidence in myself. You know, I was very shy, I was very unsure of what I was capable of. And so what I would really tell young girls is that, you know, you're capable of immense thing. You know, बहुत capabilities होती है आप में. विश्वास करिए अपने आप में. And hmm. try to learn from people. Try to learn whatever skills you can from people. Read, be empathetic, be open, be curious, and just have a joy for life. खुश रहिए, अपने पे confidence रहिए. And there's so much pressure to earn money, and I understand that. पर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है ना, पैसा अपने आप आ जाएगा. Do something Hmm. that makes you happy, that makes you joyful, जो आपको खुशी देता है end of the day. Like, you finished a difficult day, but you are still talking to me for an hour, and that's giving you joy. For me, you wanting to talk to me gives me joy. And it's that little things that make life fuller. So, rather than obsessing about आप क्या करते हैं लाइफ में, क्या अचीव करते हैं, कौन सा स्टेज अचीव करते हैं, इफ यू कैन लिव वन डे रियली वेल एंड फुलफिल्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे. सो I don't know. I hope that makes sense. And just to add, I think a little bit more, I think looking at your example of how you explored and research ki context mein you went somewhere and you found a connection there living with Adivasi family and you found your calling from there. So I think for young girls, Absolutely. And like you said, I found my calling very late in my life, right? I was not in my, I mean, if you look at my life, I have explored so many things. So when I moved to Matar to farm, my family was like, अच्छा तो अब हम farming करते हैं. Very nice, very nice. And they thought कि मतलब ये नया phase है पूर्वी का, right? Because I've tried designing, I've tried something else, I've tried everything under the
son. So they would be like, अच्छा तो अब हम कपड़े बना रहे हैं, very nice, very nice. अच्छा अब हम ये कर रहे हैं, very nice, very nice. तो जब मैं farming के लिए आई तो my parents also did not believe me. They were like, and I guess I also wasn't sure, just something. Hmm. I was also not sure. So my parents were also like, summer आएगी, गर्मी बहुत होगी, यहाँ AC है नहीं, मैडम आ जाएगी घर पे. So I guess you just have to trust yourself and trust the process. And really important thing is to have people who believe in you around you. Have a gang of girls who you can talk to, who believe in you, who push you um, to do better. And Hmm. not get caught up in all this, sundarta and ye and wo. And I think, I'm not saying it's not important, but I'm saying that a lot of the times the young girls I see, they waste their time too much on how they look than how they should feel, and how they should, feel about things, and now Hmm. not how about how someone feels about them, right? Hmm. So, give yourself the opportunity to do something beyond just that, and you will discover that you have so much potential that you can do so much in life. And I already believe in all of you, anyways. So I don't doubt your ability to do amazing things. I mean, look at you. You've grown so much since I've known you. You've become a completely different person, and you've made an effort to learn so much in life, and to do so many new things in life. And I'm sure it must have been difficult for you to push your boundaries. I'm sure it must have been scary, but look at you now. I'm so proud of you. Thank you so much. So I think those were all my questions. So if there's anything that I've missed out on, but you want to share, if there's anything like that. I just want to wish you all the best with this podcast and your life. And I'm sure this broadcast is going to be a huge, huge success. Please continue doing it. Please be curious and ask questions that lead you to interesting answers, and have fun while you're doing it. I wish you all the very, very best. Thank you so much, ma'am. Yeah. So थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन जिन्होंने यहाँ तक ये पॉडकास्ट पूरा देखा है. मैम वाज टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग योरसेल्व्स विद पीपल हु बिलीव इन यू, हैविंग अ कम्युनिटी लाइक दैट. So we the women is a community like that जहाँ पे we try to be each other's cheerleaders. तो अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में ईमेल होगा, यू कैन राइट टू अस. Also please like this video, share this video. This is a very new podcast, this is a very new YouTube channel as well. Subscribe also. So you'd be helping us a lot if you do those things. So thank you so much everyone for joining in. Thank you so much, ma'am, for joining today, Thank you so coming. much for having me. Thank you so much for having me. It was so much fun. I wish you all the best, and take care of yourself. Thank you, ma'am. All right.